Hello guys and welcome back to my channel and thank you so much for showering lots and lots of love on this series. मुझे expected था because मेहनत तो बहुत डाली थी but उससे भी ज़्यादा मिला है and people are messaging so many things and I'm just so happy reading all those messages. Thank you so much again. That actually keeps me going. So another day, another episode. Today we will do LLP agreement first. सबसे पहले LLP agreement. LLP agreement भी एक ऐसे पांचट agreement है. यानी तुम्हें अगर इसके बारे में पता है what exactly the concept of LLP is, उसका तुम क्लॉज बना लो. सबसे इजी है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे एक क्लॉज बना लो, एक क्लॉज लाइबिलिटी पे बना लो, एक क्लॉज नाम पे बना लो, एक क्लॉज जो मेन सर्विस है ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर बना लो, एक क्लॉज अकाउंट्स पे बना लो, एक क्लॉज ड्यूरेशन पे बना लो और लास्ट के तो हमारे है ही कॉमन एकदम जिंदाबाद वाले क्लॉजेस, दैट इज टर्मिनेशन, डिस्प्यूट, ब्रीच. मेरे को तो लगता है अब मुझे कभी कभी जब व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग अगेन एवरी सिंगल डे मुझे लगता है ये इनको आता होगा, बट देन आई फील लाइक नो, इफ एनी पर्सन इज वाचिंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम आई विल टीच यू द होल LLP agreement विद इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम एज द फॉर्मेट ऑफ द सीरीज इज. तो चलिए शुरू करते हैं LLP agreement. एक चीज सिर्फ समझना कि LLP agreement किसके बीच में होगा, दो लोगों के बीच में होगा जो दो लोग मिलके बना रहे हैं LLP. कैसे लिखेंगे? दिस LLP agreement made on dash day of dash at dash between Mr. A, son of dash, resident of dash, hereinafter referred as Mr. A on one part, and Mr. B, hereinafter son of dash, resident of dash, hereinafter referred as Mr. B on other part. देन आता है हमारा फर्स्ट रिसाइट कि ये बंदा और ये बंदा मिस्टर ए मिस्टर बी आर स्टार्टिंग दिस LLP एनी पर्टिकुलर सिटी वॉट एवर यू राइट द नेम एंड दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, कुछ भी नाम लिख लो, बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स, बिजनेस ऑफ डीलरशिप or something they are doing, and then comes our common clause. This is all your starting. Then testatum लिखेंगे. Now this agreement witnessed as under. First point लिखेंगे हम नाम, that is name of LLP clause. और इस agreement में सारे heading clauses की heading लिखना जरूरी है. So you have to write name of agreement, PSR, ये सारे clauses लिखना. Name of LLP first clause. उसमें क्या लिखेंगे हम? एकदम बेसिक लाइन, that the name of LLP shall be dash hereinafter referred as LLP. Then second point लिखेंगे registered office. The registered office of the LLP is situated at dash. फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे बिजनेस. ये सबसे बकवास अग्रीमेंट है बट ये पेपर में आता है. एंड देन इसमें कभी भी पेपर में ये भी आ जाता है कि राइट्स ऑफ LLP बताओ, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बताओ, ऐसे कुछ तो क्वेश्चंस आ जाते हैं. बिजनेस ऑफ LLP उसमें लिखेंगे दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ LLP इज 1 and 2. कोई भी ऑब्जेक्ट लिख लो, दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम गुड्स या दे आर गोइंग टू डू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस गुड्स, कुछ भी लिख लो तुम्हारे हिसाब से. सिर्फ एक चीज याद रखना, हमें ऑब्जेक्ट कभी भी या बिजनेस पर्पस इंक्लूसिव लिखना होता है. सो हाउ वी विल राइट इन द एंड incidental matters thereto for the fulfillment of this objective. Then we can write the PSR clause, this profit sharing ratio, and in that we will write the PSR ratio of the part between the partners will be dash. I'm just going to tell you 6 to 8 clauses, and if you stick to this 6 to 8 clauses you are going to get good marks in exam. I'm damn sure, because this is what I also followed. So next clause is breach clause. In that what we will say that either of the parties of this agreement cause any damage to third party in the name of LLP, such partner will be liable to indemnify the other partner and LLP and third party also. Then our arbitration clause, that is in case of dispute we will refer the matter to Arbitration and Conciliation Act. In witness whereof वाला point on last में witnesses की sign and parties की sign. That's it. बट हम इसमें और कौन से क्लॉजेस ऐड कर सकते हैं? हम पार्टनर्स को राइट दे सकते हैं, राइट टू रिकॉर्ड. देन हम अकाउंटिंग ऑडिटिंग का क्लॉज लिख सकते हैं. देन हम ड्यूरेशन का क्लॉज लिख सकते हैं. ड्यूरेशन का क्लॉज भी बहुत आसान है. सी LLP एक तो दो तरीके से बन सकती है, एक तो एट विल पे बन सकती है या तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए बन सकती है. दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट इन ड्यूरेशन क्लॉज, दैट LLP शैल बी इनकॉर्पोरेटेड एट द विल ऑफ पार्टनर एंड कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स. Or we can write the LLP was made for particular purpose. When the purpose is achieved, LLP will be dissolved. एक बार वापस मेरे साथ रिकॉल करो. LLP में कौन से क्लॉजेस थे? नेम ऑफ LLP था, ड्यूरेशन था, अकाउंटिंग ऑडिटिंग का क्लॉज था, आर्बिट्रेशन था, ब्रीच था, PSR था एंड बिजनेस सर्विसेज था. ये सारे क्लॉजेस थे LLP agreement में. Another agreement for the day is joint development right agreement. अभी तक हमने जितने भी agreement किए ना कहीं we have listened about it or we know the terms and conditions. This agreement is little different, but actually you will learn drafting in this. And again I am saying one point, your agreement should be as inclusive as possible for practical life, but in exams you just have to write 5 to 7 points. 7 points are maximum that you should write, because for 5 marks you should write maximum 1.5 page. If you have great speed then only you should write uske upar. Otherwise just stick to that rule.
So joint development right agreement. पहले तो we'll understand the concept. There's a owner, there's a developer. This owner guy has the property, but he is unable to prepare and make a whole real estate project by himself. So this owner guy approaches the developer guy कि you please come here and you kind of are professional, so help me in building this real estate project. For this particular arrangement, we are making an agreement. So now how we will write this agreement? Joint development right agreement. This joint development right agreement made on dash day of dash at dash between Mr. A, son of dash, resident of dash, hereinafter referred as landowner या owner on one part, and Messrs. ABC developers acting through Mr. X, son of dash, resident of dash. So एक पूरी फर्म है जिसका एक पार्टनर ये प्रोजेक्ट संभाल रहा है. Messrs. ABC developers and Mr. X is a person who is handling this. Son of dash, resident of dash, hereinafter referred as developer on other part. Then in the first recital we will write, whereas Mr. A is absolute owner of property as described in Schedule 1, and whereas the owner is desirous to construct a real estate property, but he is not well equipped. Therefore, he approaches the developer and transfers his construction right to the developer from now. Then we will write common clause, then testatum, and then first clause will come. If you don't understand the terms like recitals, common clause, testatum, you should watch the first basics of draft first video. It is very informative video in very less amount of time. First point that we will write is security point. Again, in this agreement, we don't have to write the clauses name. All and all, we have to write the clauses only. So first point, security clause. Here developer will give security to owner as he is using owner's property to build a particular real estate project. So how we will write this point? The developer shall pay a sum of rupees dash as in security deposit which shall form part of total consideration which is payable on the completion of this project. This is your security clause. Don't consider this whole agreement as a headache. Consider it as an easy point and then start reading and learning it. If you consider any single thing easy तो फिर वो और आराम से हो जाती है. Second point we will write कि performance क्या है या superstructure कैसे बनने वाला है of that particular building or plan. That the developer has agreed to build a superstructure on the immovable property as mentioned in Schedule 1, mutually agreed by both the parties and business plans mentioned hereof, and approved by competent authority. This is your second point. ये थोड़ा tricky point है, इसको 2 बार और सुनो. Listen this 2 more times. You will get an understanding of it. Third point we will write is cost. Who is going to bear the cost of this project? That the entire cost of project, material, labor shall be borne by developer. See, while making this whole real estate project, the owner also gets few property or flats for himself. ओनर को भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या फ्लैट्स जाते हैं उसके पास. सो इस पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स. Whatever property या flats owner has acquired by himself उस पे टैक्स ओनर भरेगा. जो भी प्रॉपर्टीज डेवलपर ने रिटेन किए उस पे टैक्स डेवलपर भरेगा. व्हाट टैक्स वी आर टॉकिंग अबाउट? प्रॉपर्टी टैक्स. हाउ वी विल राइट दिस पॉइंट? दैट द प्रॉपर्टी टैक्स शैल बी पेएबल बाय द ओनर फॉर द फ्लैट्स दैट ही हैज रिटेन्ड फॉर हिमसेल्फ. And the flats occupied by the developer or builder shall be maintained and managed by the builder himself. This is your another point. Then we can write more points in this कि लाइसेंस कौन देगा, क्या देगा, उसके बारे में बात कर सकते हैं. मॉर्गेज के बारे में बात कर सकते हैं. वन इजी पॉइंट दैट वी कैन राइट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट का पॉइंट. कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी वी आर नॉट ट्राइंग टू गिव कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन दिस, बट व्हाट वी आर डूइंग इज ओनर को हम प्रॉपर्टी की अथॉरिटी दे रहे हैं टिल द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इन हिज हैंड. हाउ वी विल राइट दिस पॉइंट? दैट द ओनरशिप राइट शैल बी रिटेन्ड बाय ओनर हिमसेल्फ until he gets the completion certificate by the competent authority. This is your another point. Then हमारे वापस breach and arbitration वाले point. I hope you have understood the concept, understood the clauses and understood the drafting. These 3 things are very important in any drafts. In this agreement I have written more clauses also. You should pause the video and read the clauses by yourself. If you don't understand anything, comment down in the comment section. I'll reply to that. In the end of this, we will write schedule because there is an involvement of immovable property. Schedule में वही normal चीज़ है in the east of, west of, north of, south of, and then testimonium, and then witnesses signature and signature of the party. I hope you like this video. Thank you so much for watching and keep showering love and sharing this video. Like, share, subscribe. Thank you so much. Keep hustling and keep praying.